तो हम लोग अभी जा रहा है याजली में फेलोशिप के लिए। अभी हम लोग निकलेगा, यहाँ में हम लोग का टीम है, ये हमारा गाड़ी है, ऐसा हम लोग निकलेगा अभी या पहुँचेगा पता नहीं कब पहुँचेगा। अभी टाइम है लगभग 6:15। आई थिंक बाई 7 हम लोग पहुँच जाना चाहिए। ये गाड़ी तो राइट नाउ अभी हम यजली पहुंच चुका है। अभी हम एलिस जी के घर जा रहा है, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो हम लोग अभी जस्ट वी हैव डन आवर ब्रेकफास्ट। एक हल्का सा मैगी खाया, पानी पिया, स्प्राइट भी पिया है। करने जा रहे हैं और हम लोग का प्रोग्राम शुरू होगा। रुक जाएगा यहाँ से लगभग 1 घंटा का रास्ता है जहाँ पे हम लोग जाएगा। सो देखते रहना, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हम लोग सबको जय मसीह की। हम लोग अभी ये लिचलिथ पहुंच गए। हम लोग ये के लिए मिनिस्ट्री के लिए हम लोग पहुंचे, अभी पहुंचे न्यू दिल्ली से। So as we have come here, we truly believe that Lord, Come and witness with us. Lord is gonna do something mighty things in this place. So be with us, be with us. Today it won't be us as always, हम लोग हमेशा नहीं करेगा। Today it will be the Holy Ghost who will be working. It is the Holy Ghost जो move कर रहा होगा, and we are looking forward for the move of the Holy Ghost. Thank you so much. समर में कैसा बंदा कौन जाता है, बना बताओ। सचिन के साथ कौन बनना चाहते हैं, बना बताओ। करीना का जैसा कौन बनना चाहता है, बताओ। अभी जीसस का जैसा कौन बनना चाहता है, वो बताओ। Are you ready? Are you ready?
पता नहीं, हम लोग जो एक ईटानगर से आया है, एक चर्च से, ईटानगर के चर्च से, आरबीआई के वहाँ से, तो वहाँ से आके आप लोग यीशु के बारे में बताने के लिए आया है आप लोग। जीसस है ना, जीसस जो बस इतना में नहीं है, मतलब बहुत सारे इंसान सोचते हैं कि जीसस जो बस एक चर्च का अंदर पर है। इंसान लोग क्या है, कोई कुछ बोल रहा था, उसके साथ जाके छोटा सा चीज में जाके आप जो पूरा लड़ाई झगड़े से करने शुरू हो जाएगा। ऐसे करता था हम मेरा जीवन में। लेकिन क्या कि जब हम असली का जीसस को हम लिया है ना अपने जीवन पे, तो जीसस को हम लेने के बाद क्या हुआ कि ये सब धीरे धीरे करके बंद हो गया। तो ये सब बंद हो गया। बंद होने के बाद फिर हम अपने जीवन में देखा है कि जब आपको ABCD पढ़ा रहे हैं, आपको ABCD पढ़ेगा, बाद में एक टीचर आएगा, आपको गंदा बात सिखाएगा, आपको ठीक है, आपको पता है ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है। तो मसीह जीवन में जो भी कुछ करेगा हम ध्यान से करेंगे। चर्च क्यों जा रहा है संडे ये लोग भी छोड़ा उसका भी हम खोल लिया। क्यों खोला? हम देख लिया, हम जान लिया क्या है। ये कब पता होगा? आप लोग जब वचन पढ़ेगा, आप लोग जब पवित्र आत्मा की संगति रखेगा, समझ गया? ऐसा लड़का लड़की के सामने नहीं रोएगा। हम क्यों रोएगा? लड़की के सामने क्यों रोएगा? सामने में आंसू पर आंसू निकलने शुरू हो, अपना रो रहे हैं, जीसस जिंदा है, ये जिंदा है। तो फिर पता क्या हुआ है, जो हम बोझ क्या करते ना, कभी क्या होता है कि पापा मम्मी का वजह से एक बोझ आता है, दिल दुखी होता है। कभी दोस्त का वजह से दिल दुखी होता है हम लोग को। कभी इसका वजह से उसका दिल दुखी होता है। अचानक से मेरा पूरा वो दिल जो दुखी था पूरा हट गया। मेरा जो बोझ था भारी पन था, बोझ वो पूरा हट गया मेरे अंदर से। हम साथ the Holy Communion and the fellowship of the Holy Spirit be with us, especially with the students and with the teachers of this school forever and ever. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The service has been end. The service was very glorious, very blessed. अभी हम सब साथ में एक लास्ट फोटो क्लिक सेशन करेगा अभी से। Yes. Go to God. वो मुँह से पकड़ रहा है। Moses. So हम लोग का सर्विस we have just recently ended. एक बहुत अच्छा सा एक पिक्चर भी खींचा। And service was very glorious. बहुत सारे इंसान लोग we believe that they have understood Jesus क्या है and we hope that they will follow Jesus. तो आज यीशु ने बहुत बड़ा कार्य किया। आज सारे जितने भी बच्चे सबके दिलों को छुआ, सबका लाइफ बदल गया। आज इनका ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था बच्चों का। लेकिन आपको आज का सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? I felt really blessed and really good, and I'm thankful for the Lord that the Lord is rising an army from Yajali, I believe. This is a government school, but it seems like more better than private, some of the private schools. And yes, the Lord is moving mightily, and it is above 100 kids are here. They are really hunger for the Lord. Yes, and I believe that in the coming days we're going to hear lots of testimony and a revival from this place.
थैंक यू। It was good. अभी हम लोग को यहाँ से हम लोग को सब्जी मिला है, so I'll just take you to there. Yes, let's go. और सब्जी उठाने देंगे। अब दिखाते हैं आपको। चलो। दिखाते हैं हमारा। कैमरा पर्सन खुद ही कैसा लगा? आज का दिन बहुत ही ब्लेस्ड रहा। जो भी होता है गॉड अपना उसका ग्लोरी महिमा को ही सबसे ये करता है, आगे होता है। इसलिए आज का सर्विस बहुत लगा। बच्चा छोटा था लेकिन भी आत्मा में बहुत बड़ा था। हम विश्वास करते हैं गॉड ये आज का सर्विस से बहुत सारा आदमी को अराइज करे। और हम सब भाई जो न्यू RBM से जो भाई आए उसको भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि गॉड का काम है, वो कभी पीछे नहीं मुड़ता, आगे है वो। इसलिए आप सबको थैंक यू, धन्यवाद। आमीन। और हम लोग को जो सब्जी आउट तक गॉड इज गिवन अस, इसका हम लोग को इगिन से ठीक है। एले साथी को मिलो। चलो ना बगल का यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे और उठा रहे हम लोग पंपकिन मिला है, पंपकिन पत्ता नहीं है ये क्या पत्ता? पता नहीं। फ्रेश, एकदम फ्रेश है। एकदम जजाले से हैंड प्लग हो क्या पंपकिन वहाँ पे दिख रहे हैं। वो बगान चुरी लगा के हम लोग का लंच अभी खत्म हुआ है और इट वाज वेरी डिलीशियस। एंड राइट नाउ अभी हम जाने के लिए रेडी कर रहे हैं। हम अपना सामान ले रहा है, कुछ ही देर में हम निकल जाएंगे। We love this place. Thank you, Jesus. It's a very blessed service. You know, as the Bible says that remember, you know, the Lord in the youth's time, Lord. Same manner, ये जितना जो जवान युवा था वो लोग, you know, प्रभु को याद किया जवान समय में। And we believe ये व्यक्ति लोग बहुत बड़ा ऑफिसर्स बनने वाला है यीशु के नाम में। And more than that, sons of God बनेगा। And बन चुका है। So हम लोग अभी हम लोग का जस्ट सर्विस खत्म हुआ है। And you can see the abundance of pumpkin in this place and abundance of sabji in this place. So we are very grateful. We didn't thought कि हम लोग को सब्जी इतना मिलेगा। वैसे सब्जी का दाम बहुत ज़्यादा हो गया। And what are your thoughts about it? Yeah, we are very blessed to have this. Thank you, Jesus. And what are your thoughts about it? It's like a brand new vehicle, like S11 classic मतलब। लेकिन यहाँ पर इंसान के साथ सब्जी भी आ रहा है। It's a very unique thing by the way. पर जो भी है प्रभु का महिमा के लिए है। Amen. धन्य हो। Try
गिर जाएगा ना बाद में। नहीं गिरेगा।